Okay, fine. So I guess everybody has put their attendance. So let me share my screen. I hope it's visible now. Okay, so yeah, great. It is visible. So in the last class, we have started new chapter, that is financial planning, and we have seen some theory regarding this chapter, like what is savings, and these are the options for savings and investments. Then we saw what is investment is, and I think we had seen this example as well, solved example, right? So we will just revisit this example again, so that we will understand the past concepts and we can continue from there. Okay. So Shamrav's income in 2015-16 after paying all taxes is this much, that is 6 lakh and 40,000. He pays Rs 2,000 per month for insurance and 20% of his annual income into his provident fund. So he puts aside 500 rupees per month for emergencies. How much does he have for yearly spending? So एनुअल इनकम जो है वो है 6,40,000। इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है 2,000 पर मंथ, यानी कि साल का हुआ 2,000 इंटू 12, दैट इज 24,000 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड है 6,40,000 का 20%, यानी कि 1,28,000 रुपीज। इमरजेंसी के लिए जो अमाउंट साइड में रखा है, that is 500 per month, means 500 into 12, that is 6,000 rupees. So total planned expenditure मतलब 24,000 जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, 1,28,000 जाएगा प्रोविडेंट फंड में, and 6,000 will be for emergency. So if we add them all, it will be 1,58,000 rupees. So 1,58,000 rupees जो है वो एक्सपेंडिचर है, टोटल प्लान एक्सपेंडिचर, राइट? सो टोटल ईयरली एक्सपेंस कितना है? टोटल ईयरली एक्सपेंस है दिस मच। सो उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे, सो दैट विल बी, दिस इज द amount that is available for yearly spending. Okay, so this was the example that we already saw in the last class also. Okay, so let's go to the second question. Mr. Shah invested 3,20,000 rupees in a bank at 10% compound interest. He also invested Rs 2,40,000 in mutual funds. At market rates, he got 3,05,000 after 2 years. How much did he gain? Which of his investment was more profitable? सो सी यहाँ पे मिस्टर शाह ने दो जगह पे इन्वेस्टमेंट की है। ओके, सो फर्स्ट वन वाज ही केप्ट 3,20,000 rupees in a bank, and the interest rate is 10%. Yeah, 10%, and the interest is compound interest. Okay, so he also invested 2,40,000 in mutual funds. So I don't know whether you know about mutual funds or not, but this thing is related to share market and all. Okay, so we can invest money there. There's always a risk when we invest in shares or mutual funds, but there's also a chance of getting a profit. Okay, so ये हुआ म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया, एंड बैंक में कुछ इन्वेस्ट किया। ओके, so mutual fund से at market rates he got 3,05,000 after 2 years. How much did he gain and which of his investment was more profitable? So 2,40,000 उन्होंने इन्वेस्ट किया, 3,05,000 मिला। सो उनको गेन कितना हुआ ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है, मतलब जो बैंक में इन्वेस्टमेंट हुआ वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल था, या फिर जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया था वो प्रॉफिटेबल था। सो दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज
we shall first calculate the compound interest on the money invested in the bank. So compound interest is equals to amount minus principal. Okay, so this is the formula. So I is equals to a minus p. So this is the interest we are calculating. Okay, so interest is what? Interest is the actual profit, right? So let us suppose he has invested 3,20,000 rupees, and जो कुछ भी interest मिलेगा, so that interest is going to be the profit. Okay, so we have to find out how much did he gain, मतलब उनको कितना profit हुआ, right? So a minus p अगर हम करेंगे, so if we go with this formula, see p into 1 plus r divided by 100 raised to the power n. This is the formula for compound interest amount, right? And p is for principal, right? So we have values, we have value of p, right? P is what? P is principal. So what is principal amount here? Principal amount is 3,20,000. हम बैंक की बात कर रहे हैं. We are not talking about mutual funds 8. Okay. And rate is 10%. Right? 10% का rate है. And see, uh, since we are getting return after 2 years, मतलब 2 साल की बात कर रहे हैं ना, म्यूचुअल फंड से हमें 2 साल में 3,05,000 रुपीज रिटर्न मिला है, जबकि हमने 2,40,000 उसमें इन्वेस्ट किया था. सो फॉर बैंक ऑल्सो वी विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years ओनली, राइट? सो n की वैल्यू यहाँ पे रहेगी 2, सो विच इज गिवन हियर. सो आफ्टर दैट if we keep calculating this, so we will get this amount. Okay, 67200, 67,200 rupees. So this is what Mr. Shah invested. Three, sorry, what is happening? Yeah, he has invested this much and he got this much amount as a interest. Okay, so let us see percentage of interest obtained on the investment. So अब यहाँ हमें परसेंटेज निकालना है. So what we can do is 100 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और इस अमाउंट पे हमें ये प्रॉफिट हुआ है, राइट? सो वी विल गेट द परसेंटेज. सो इट इज 21. मतलब द इन्वेस्टमेंट इन द बैंक गेव अ प्रॉफिट ऑफ 21%. ठीक है, 2 साल के लिए कितने परसेंट का हमें इन प्रॉफिट मिला? इट वाज 21% फॉर बैंक. ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया था वो तो कैलकुलेशन करना बाकी है. ऑलराइट, सो सी the amount Mr. Shah got after end of 2 years from mutual fund is 3,05,000 rupees. The gain from mutual fund is, see, 3,05,000 रुपए मिले, जबकि हमने 2,40,000 रुपीज ही इन्वेस्ट किए थे. Okay, so now tell me what is the profit? Profit is this much, 65,000 rupees. Okay, 65,000 rupees profit हुआ. Now tell me which investment is profitable. सी यहाँ पे हमें कितने रुपए मिले? 67,200 रुपीज, जबकि हमने बैंक में इन्वेस्टमेंट किया था. सो वी गॉट दिस मच मनी. ठीक है, जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था तो वी गॉट 65,000 रुपीज. सो विच इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल, बैंक वाला और म्यूचुअल फंड वाला? एनी आइडिया? टेल मी. Students, I'm waiting for answers from you, maybe in the chat box, maybe by turning on your mic, whatever you feel. म्यूचुअल फंड्स वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है. ओके, सो ठीक है, कादम्बरी ने तो कह दिया, बट आई डोंट थिंक सो. व्हाट डू यू थिंक आयुष एंड विनित, वेदांत? कादम्बरी का कहना है कि म्यूचुअल फंड वाला इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिटेबल है. कैसे होगा? सी म्यूचुअल फंड्स में तो हमें 65,000 रुपीज मिले, लेकिन बैंक में तो हमें 67,200 रुपीज मिले. सो मुझे बताना, 65,000 ज्यादा है या फिर 67,000 ज्यादा है? ओके, आयुष ऑल्सो सेज इट्स म्यूचुअल फंड. ओके,
सो वेदांत सेज या 67 इज मोर. सो फिर अगर 67 हमें बैंक से मिल रहा है, सो व्हाई वी आर सेइंग कि म्यूचुअल फंड इज प्रॉफिटेबल? But there is the investment is different. Okay, that's one of the reason. Okay, okay, fine. So you both are correct, Kadambari and Ayush. You are absolutely correct that mutual fund is more profitable because see, we see profit in percentage, students, not in rupees. Okay, so यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? How much? बैंक में कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन. जब तक यहाँ पे मुझे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 4. ओके, सो आई नीड 4 आंसर्स इन द चैट बॉक्स, देन एंड देन वी विल गो अहेड. ओके, नो 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 वेदांत, आई एम आस्किंग अबाउट परसेंटेज. कितने परसेंटेज का हमें प्रॉफिट मिला? इट इज 21%, राइट? कहाँ पे? बैंक में. But when we calculate percentage for mutual fund, it is approximately 27.08%. राइट? सो अभी 27 ज्यादा है या फिर 21 ज्यादा है? एब्सोल्युटली 27 ज्यादा है. सो 21% हमें कहां से मिल रहा है? वी आर गेटिंग इट फॉर व्हाट? We are getting it for mutual fund, right? So the investment in mutual fund is more profitable, we can say that, right? Now if you have confusion कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, so let's take an example. Okay, so मान लो I invested 50 rupees in बैंक. ठीक है, मैंने बैंक में 50 रुपीज इन्वेस्ट किया एंड म्यूचुअल फंड में मैंने 10 रुपीज इन्वेस्ट किया. ठीक है, आई इन्वेस्टेड 50 रुपीज इन बैंक एंड 10 रुपीज इन म्यूचुअल फंड. ठीक है, सो एक साल बाद बैंक ने मुझे 50 रुपीज का मुझे दिया, लेट अस सपोज 70 रुपीज. ओके, सॉरी 50 रुपीज का कितना दिया मुझे? 70 रुपीज दिया. सो 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट हुआ बैंक से, राइट? म्यूचुअल फंड में मैंने कितना इन्वेस्ट किया था स्टूडेंट्स? म्यूचुअल फंड में मैंने कितना इन्वेस्ट किया था? डू यू रिमेंबर? नो 10 रुपीज. आई इन्वेस्टेड 10 रुपीज इन म्यूचुअल फंड. 50 रुपीज तो बैंक में किया था. बैंक में 50 किया, सो बैंक ने मुझे 50 रुपीज का 70 रुपीज दिया एक साल में. मैंने म्यूचुअल फंड में 10 रुपीज किया था, सो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का मुझे मिलता है 15 रुपीज बैक. 10 रुपीज का मुझे 15 रुपीज बैक मिला. सो विच इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल? अगेन, म्यूचुअल फंड में मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जबकि मुझे बैंक में 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ. बट स्टिल the investment in mutual fund was more profitable because अगर हम परसेंटेज निकालें, सो म्यूचुअल फंड ने मुझे 50% का प्रॉफिट दिया है स्टूडेंट्स. हाउ मच? 50%. मतलब 10 रुपीज का अगर 15 रुपीज मुझे रिटर्न मिलता है, सो आई गेट 50% प्रॉफिट, राइट? एंड when we talk about bank, so बैंक में मैंने 50 रुपया इन्वेस्ट किया एंड इफ दे आर गिविंग मी 70 रुपीज, मतलब 20 रुपीज का प्रॉफिट, यानी कि मुझे 40% का प्रॉफिट मिल रहा है. कितना? 40% का. सो वी ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट इन परसेंटेज, इन नॉट इन रुपीज. ठीक है, वी ऑलवेज कैलकुलेट परसेंटेज. परसेंटेज जब हम निकालेंगे तब हमें समझ में आएगा कि विच इन्वेस्टमेंट इज मोर प्रॉफिटेबल. अमाउंट से हमें समझ में नहीं आता है. ओके, सो दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू क्लियर हियर. Okay, so let's get to the next example. Mr. Sheikh invested 4 lakh in a glass industry. After 2 years, he received Rs 5 lakh 20,000 from the industry. Putting aside the original investment, he invested his gains in the fixed deposit and in the shares in the ratio 3:2. How much amount did he invested originally in each of the schemes? See, very good question it is. पहले क्वेश्चन समझ लो. ठीक है, मिस्टर शेख के पास 4 लाख रुपीस थे. सो ही इन्वेस्टेड दैट इन अ ग्लास इंडस्ट्री.
ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री में उन्होंने 4 लाख इन्वेस्ट कर दिया। अभी 2 साल बाद, 2 ईयर आफ्टर 2 ईयर्स ही रिसीव 5,20,000 फ्रॉम द इंडस्ट्री। मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,20,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। नाउ पुटिंग असाइड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी, कितनी थी इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स? 4 लाख थी। सो 4 लाख को अगर हम साइड में रखे, he invested his gains in the fixed deposit and in the shares in the ratio of 3s to 5. How much did he invested originally in each of the scheme? तो हमें क्या निकालना है? Our question is, उन्होंने उनका जो प्रॉफिट था, मिस्टर शेख का जो प्रॉफिट था, वो इन्वेस्ट किया है फिक्स डिपॉजिट में और शेयर्स में। ठीक है, सो फिक्स डिपॉजिट में कितना किया और शेयर्स में कितना किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो चलो, वी विल try and find out how we can do that, right? So see, 1,20,000 रुपीज जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है, राइट? नाउ 3/5 into 120, sorry, 1,20,000। सो ये 3/5 क्यों लिखा यहाँ पे हम पकड़ते हैं। नाउ सी, if let us suppose we have a pie and it has 1, 2, 3, 4 and 5, right? So 5 pizza slices are there, let us suppose, and these 3 are separate and these 2 are separate, right? So see, when we talk about these 3 slices, these are 3 out of 5, right? ये जो है ना 3, तो ये 3 out of 5। so 3 out of 5 into 120, 1,20,000. So this amount is the amount that is invested in the fixed deposit. So 72,000 rupees fixed deposit में invest किया है। How can we calculate this? See, uh, 5 से 1,20,000 को डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज 72,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, सो अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स। सो सी, फिक्स डिपॉजिट टू शेयर का जो रेशो था वो 3:5, 3:2 था। सो 2/5 into 1,20,000, so again we get 48,000। if you add this 72,000 plus 48,000, so that will result into how much? 1,20,000, राइट? सो इस तरीके से सी, 1,20,000 का प्रॉफिट था, सो दे डिस्ट्रीब्यूटेड इट एंड इन्वेस्टेड अकॉर्डिंगली इन fixed deposit and shares. So that was the question and that we have answered. Any doubt in this? No doubt. Okay. I'm sorry. Okay. What about others? Vineet and Ayush. No doubt. Okay. Vineet, are you there? Hopefully you are there. ठीक है. Let's get to the next question. See, fourth one. The ratio of Mr. Anil's monthly income to expenditure is 5:4. Monthly income to expenditure is 5:4. For Mr. Aman, the same is 3:2. Also, 4% of Aman's monthly income is equal to the 7% of Anil's monthly income. If Anil's monthly expenditure is 96,000 rupees, then we have to find out the Aman's annual income and savings made by Mr. Anil and Mr. Aman. So this example may look a little bit complicated, but it is not. Okay, so we have to go step by step, right? सबसे पहले तो पहला सेंटेंस समझ लो। मिस्टर अनिल्स मंथली इनकम टू एक्सपेंडिचर इज 5:4। सो इफ आई पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, सो मुझे बताओ कि मान लो मिस्टर अनिल का जो मंथली इनकम है दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, सो 100 रुपीज है, तो हाउ मच देयर एक्सपेंडिचर विल बी फ्रॉम दिस रेशो, आप बता सकते हो क्या? इफ ही अर्न्स 100 रुपीज, सी, इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशो है
5:4. एनीवन? नहीं? ठीक है। सी, anyone want to try? No. Okay. So see, we are not learning this chapter only for writing answers in the examination. Okay, this is very important chapter. We need to have understanding of all the things. मतलब किस तरीके से क्या चीजें कैलकुलेट होती है. No, 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 wait. Not understand this question. Okay, fine. See, होता है. See, I think this is your first chapter, sir. Will the formula come in 4x plus 5x form? Yeah, it's bit like that, but it is not that complicated. Okay, so मतलब तुम थोड़ा सा इसे ज्यादा ही complicate कर रहे हो, so इसकी जरूरत नहीं है. Okay, so just focus. Now, अभी रेशो की बात कर रहे हैं. So इनकम और एक्सपेंडिचर, इसका रेशो क्या है? 5:4 है स्टूडेंट्स. सी, इनकम के लिए मैंने आई लिखा, एक्सपेंडिचर के लिए मैंने ई लिखा. इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशो है 5:4. ठीक है, तो मैंने क्या कहा? इनकम कितना है? 100 रुपीज है. एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं है तो निकालना है, तो मैं यहाँ पे ई लिखूंगा. और अभी 5:4, सॉरी. नाउ मुझे ई की वैल्यू निकाल के बताओ. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई. 5e will be equal to 400, right? 5e will be equal to 400, and e will be equal to 400 divided by 5, means 80, right? So इनकम अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ फिर स्टूडेंट्स? कितना हुआ? सर व्हाट यू हैव रिटन बिलो 100? इट्स ई. 100 के नीचे जो है ई फॉर एक्सपेंडिचर, मैंने एक्सपेंडिचर के लिए ई लिखा है. ओके, इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशियो था 5:4. इनकम मैंने एक अज्यूम कर लिया कि 100 रुपीज है, एक्सपेंडिचर हमें पता नहीं है लेकिन उनका रेशो पता है. सो वी कैन फाइंड आउट दैट. सो ई विल बी 80 रुपीज. मतलब सी, 5:4 मतलब 5 रुपए कमाते हैं तो 4 रुपए खर्च करते हैं, 100 रुपए कमाते हैं तो 80 रुपए खर्च करते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ. सो इफ इट इज सो, अभी मुझे अमन के लिए बताना. अमन का सेम फिगर क्या है कि वो 3:2 उनका रेशो है. ओके, सो लेट अस सपोज अमन अर्न्स 60 रुपीज. अभी वो 60 रुपए कमाते हैं. ओके, सो 60 में से कितना रुपए वो एक्सपेंडिचर करते हैं, खर्च करते हैं? चल मी. 3:2. ओह परफेक्ट, दैट वाज वेरी क्विक. 40 रुपीज. ठीक है ना? सी, डिड यू अंडरस्टैंड? बाकी लोग ऐसे जैसे ही मैं आंसर बता दूं, सॉरी क्वेश्चन बता दूं, या यू शुड गिव द आंसर. मतलब मैंने क्या बोला कि 60 रुपीज अगर इनकम है, so what is expenditure? So if it is 3:2, that means 40 rupees will be expenditure. Now I will twist the question. 100 rupees अगर मान लो इनकम है अमन का, so how much will be expenditure? A bit difficult but not approx value. Exact value नहीं चाहिए मुझे. See, it's not okay. See, it's not कि हम कितना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास में. ओके, इट्स अबाउट कि हाउ मच यू अंडरस्टैंड. Okay, so we have two answers. First one is 66 and second one is 24. So anybody else agree with कादम्बरी's answer? 66 जो बताया है उसने. 100 रुपए अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर कितना रहेगा? प्रोवाइडेड की 3:2 जो है, ये अप्रोक्सीमेटली आई अंडरस्टैंड दैट. या दैट्स फाइन. बराबर है. कादम्बरी का आंसर इज करेक्ट, राइट? 100 रुपी. ओके, वी हैव a little bit more precise answer. Not exact but precise we can say. थोड़ा सा क्लोजेस्ट आंसर. सो 66.3. सो आई होप कि आपको समझ में आ गया है. ओके, सो अभी पहले दो सेंटेंसेस जो है
वो समझ में आ गए कि उनके इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशो क्या होता है, कैसे निकालना होता है। सो पहले दो सेंटेंसेस आई होप कि आपको समझ में आ गए। ओके, नाउ सी सर, did not got how it came 66.3. Okay, no problem. So see, अभी फॉर वेदांत, सी वेदांत, हमारा इनकम टू एक्सपेंडिचर का रेशो कितना था? 3:2 था, राइट? यस, ओके। सो इनकम है मेरा 100 रुपीज एंड ओके या इनकम इज 100 रुपीज, एक्सपेंडिचर पता नहीं है मुझे लेकिन रेशो पता है 3:2 है। नाउ सॉल्व दिस, 100 into 2 is 200, 200 is equals to 3e, right? So e is equals to 200 divided by 3. Now calculate this, Vedant. 200 divided by 3, how much? Vedant will tell. ओके, 66.6, ठीक है। और एक प्रिसाइज वैल्यू, बट 66 वैल्यू हो, 63 66.3 हो या फिर 66.6 हो, डिड यू गेट माई पॉइंट? जो मैं बताना चाह रहा था वो समझ में आया? वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। ओके, या आई होप, या चलो ठीक है। सो पहले दो सेंटेंसेस हो गए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड रिमेनिंग एग्जांपल, remaining question. So see, also 4% of Aman's monthly income is equals to 7% of Anil's monthly income. If Anil's monthly expenditure is 96 rupees, sorry, 96,000 rupees, then find Aman's annual income and savings made by Mr. Aman and Anil. So यहाँ पे हमें रिवर्स डायरेक्शन में जाना है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ सी वी हैव अ क्लू हियर। व्हाट इज दैट क्लू? कि हमें पता था मिस्टर अनिल का जो इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो है वो है 5:4। आई विल राइट इट हियर अगेन, इनकम टू एक्सपेंडिचर रेशियो था 5:4 एंड अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 96,000 रुपीज। मतलब हमें यहाँ पे ई की वैल्यू मिल गई, राइट? सो वी हैव टू फाइंड आउट आई, दैट इज इनकम। सो ई की जगह पे मैं लिखूंगा 96,000। सी आई एम सॉल्विंग दिस इन अ शॉर्टकट मैनर, बट जब यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है ना, सो इट इज बिट लेंथी। This is just to make you understand. Okay, you have to follow the steps that are given in the book only. ठीक है? So आपको समझ में आए कि ये किस तरीके से हो रहा है. So that is why I am doing this, right? So you don't have to follow these steps, but just try and understand this. So 5:4. So क्या हुआ? I4 or 4I is equals to 5 into 96,000. Now take out your calculators and calculate the value of I. I की वैल्यू क्या रहेगी? 5 into 96,000 divided by 4. So if I'm not wrong, see, 4 ones are 4, 4 twos are 8, and 4 fours are 16. So 24,000 multiplied by 5, it should be 1,20,000. Correct me if I'm wrong. Okay. इनकम कितना है? अनिल मंथली इनकम कितना है? 1,20,000। नाउ सी कैसे यहाँ पे निकाला है। Okay, so see, Anil's monthly, okay, now we'll try to understand with the help of steps that are given in the book, right? So Anil's monthly income to expenditure is 5 to 4, 5 is to 4. Suppose Anil's monthly income is 5x and Anil's expenditure is 4x, right? So 5x is equals to, oh, what is this? 9600. Is there a print mistake, guys, here, students, maybe? I think so. There's print mistake right here. Anil's monthly income is 9600 rupees and यहाँ पे दिया है कि Anil's monthly expenditure is 96,000 rupees. Sir, mine is also showing same. Yeah, I
thing, students, here is print mistake. So see, there are two ways to solve this question again, and I think this is completely wrong. Okay, because see, यहाँ पे Anil's monthly income is 9600 rupees दिया है, जबकि यहाँ पे हमें clearly बताया है कि Anil's monthly expenditure is 96,000 rupees. Okay, so this question is completely, question is right, but the solution is wrong. Okay, so solution यहाँ पे जो दिया है, I can give it in writing. It is absolutely wrong. Okay, so we will not go with this method. We will try and solve on our own. ठीक है? I hope you are okay with that. So don't focus on this because it is completely absolutely wrong. ठीक है? चलो. So tell me, what is Anil's monthly income? What is Anil's monthly income? How much did we calculate? कितना कैलकुलेट किया है हमने? Anil's monthly income. No, no, no. It is no. 24 into no, no, Kadambari. Wait. Yeah, yeah, it's 1,20,000. We are not there yet, Kadambari. You are giving the answers now. So I think these answers might come in the next steps. But as of now, we are just here कि हमें पता है 1,20,000 is Anil's income. Okay. Hmm. Now, next clue we have is if 4% of Aman's monthly income is equal to 7% of Anil's monthly income. अभी इसे कैसे हम लिख सकते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में? सो सी, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट दिस कि जो वर्ड्स में लिखा है वो हमें फॉर्मूला में लिखते आना चाहिए. तो सी, यहाँ पे अमन का मंथली इनकम का 4% इज इक्वल टू 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम. सो सी, 4%, कैसे लिखते हैं 4% को? 4 डिवाइडेड बाय 100. सो दिस इज 4%. 4% ऑफ अमन्स इनकम, अभी यहाँ पे अमन का इनकम रहेगा, इज इक्वल्स टू 7% ऑफ हुज इनकम? अनिल्स इनकम. राइट स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा, इसे समझ में आया आपको? 4% ऑफ अमन्स इनकम इज इक्वल टू 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम. ठीक है? सो अभी यहाँ पे कौन सी वैल्यू हम रख सकते हैं एंड कौन सी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कैन यू टेल मी, कैन एनीबडी टर्न ऑन हिज और हर माइक एंड टेल मी दैट सर वी कैन पुट दिस वैल्यू एंड वी कैन गेट दिस वैल्यू? एनी क्लू? आपको लगता है ऐसा कि कुछ इसमें पुट कर सकते हैं एंड वी कैन गेट समथिंग? ओके, आई विल रिपीट. सी, नॉट एनी आइडिया. ठीक है, सी, हमें सेंटेंस दिया है 4% ऑफ अमन्स मंथली इनकम इज इक्वल्स टू 7% ऑफ अनिल्स मंथली इनकम. ठीक है? सो हमारे पास इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है? डू वी नो अमन का मंथली इनकम? डू वी हैव एनी आइडिया अबाउट इट? नो, वी डोंट हैव अमन्स मंथली इनकम. डू वी हैव अनिल्स मंथली इनकम? अनिल का मंथली इनकम हमने कैलकुलेट किया है. यस, नो, मे बी. यस, एब्सोल्युटली, वी हैव कैलकुलेटेड ना. 1,20,000 इट इज. 1,20,000. सो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इस अनिल की जगह पे मैं उसका इनकम लिख देता हूं यहाँ पे? सो इट इज 1,20,000. सो ये दो जीरो विल बी कैंसिलिंग विद दिस टू जीरोस एंड 120 मल्टीप्लाइड बाय 7. जस्ट अ सेकेंड. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. हाँ, ठीक है. सो मैं यहाँ पे ये सब इरेज करता हूँ एंड आई विल प्रोसीड फर्दर. सी, ये दो जीरोस कैंसिल आउट हो गए. एंड प्लीज टेल मी इफ इट इज गेटिंग कंफ्यूजिंग. ओके, कंफ्यूजिंग लगने लग जाए तो मुझे तुरंत बता देना सो दैट आई कैन रिवाइज दैट. सी, 100 में दो जीरो कट हो गए, यहाँ पे 1,20,000 में दो जीरो कट हो गए. सो इट विल बी या 1,20,000 में अगर दो जीरो कट होते हैं, सो अमन्स इनकम विल बी
7 into 1200, राइट, 1200 बचेगा यहाँ पे, एंड मल्टीप्लाइड बाय, और या इट इज 100 डिवाइडेड बाय 4। सो मैं ये जो लिखा यहाँ पे, ये फॉर्मूला लिखा, ये किस किस को समझ में नहीं आया, सी 7 इंटू 1200 जो है वो यहाँ पे था, तो वो मैंने एज इट इज लिख दिया। 4 डिवाइडेड बाय 100 इस साइड में था, तो जब वो इस साइड में आएगा तो 100 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अंडरस्टूड सबको, ठीक है? ओके, नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस? सी 4 ones are 4, 4 threes are 12. So a month's income will be 7 into 300 into 100, right? So 7 threes are 21, 2100 into 100. So that is approximately 210000. So it is 2,10,000. A month's monthly income is how much, students? 2 lakh, 2 lakh 10,000. Any confusion till this? कोई confusion है यहाँ तक? नहीं होना चाहिए, right? So now we have Aman's income, we have Anil's income. Now अभी हमें पूछा क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि see, find Aman's annual income. Can you tell me the answer? What is Aman's annual income? What is Anil's annual income? No need to calculate. No, it's monthly. कादम्बरी, it's monthly. हमने जो कैलकुलेट किया है वो मंथली इनकम है, 2,10,000. सो एनुअल इनकम मीन्स व्हाट? ईयरली, एक साल में कितना आएगा? So 2,10,000 into 12. So this is a month's annual income. There's difference. No, no, Vinith. Wrong again. 2,52,000 is not his. Okay, to be exact, अगर मैं कैलकुलेशन करके आपको बताऊं, so allow me a few seconds. 2,10,000 multiplied by 12. So it's approximately 25,20,000. एक जीरो लगाना भूल गए तुम। नहीं, या एक एक जीरो लगाना भूल गए तुम, ठीक है? 25,20,000. सर व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मंथ which is given after 6 months? Sir, what is called for the income which is given after 6 months? I don't think there is a specific word for that, but it can be called as half yearly income, right? 4 month के लिए I think it is called quarterly income. Yeah, it is something like that. I don't remember एक specific word कि 6 month के income के लिए ऐसा कुछ word है, okay? अगर मुझे याद आता है तो मैं मे बी दिस क्लास में या फिर अगले क्लास में बता दूंगा, if it is okay. Okay. So second question, savings made by Mr. Anil and Mr. Aman. तो सबसे पहले मुझे मिस्टर अनिल की सेविंग बताओ स्टूडेंट्स. हाउ मच सेविंग डिड मिस्टर अनिल डू? पहले तो उनका इनका, ओके फॉर्मूला लिख दो, चलो ठीक है, लिख दो फॉर्मूला, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है. मिस्टर अनिल का सेविंग कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? सेविंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. व्हाट इज इनकम फॉर मिस्टर अनिल? इट इज, मिस्टर अनिल के लिए मैं मंथली की बात कर रहा हूं, नॉट ईयरली, ठीक है? ईयरली नहीं कैलकुलेट करना है, ओके? फॉर योर कन्वीनियंस वी विल नॉट कैलकुलेट ईयरली सेविंग्स, मंथली सेविंग्स कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है? सो मंथली इनकम कितना है अनिल का? इट इज 1,20,000, या? एंड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है, कितना है? 96,000, 96,000. I need answers from everyone, students. It is not like कि सिर्फ कादम्बरी ही आंसर देगी, ओके? या 96,000. Okay, so tell me how much is saving कितना हुआ? अगर 1,20,000, oh कादम्बरी, I think you added one extra zero, okay?
So it has become 2,40,000. It should be 24,000, right? Yeah. So just remove one zero. It should be 24,000. 24,000 होना चाहिए, है ना? Yeah. Great. Okay. Now the last question from this question is, what is saving of Mr. Aman? What is saving of Mr. Aman? See, मिस्टर अमन का इनकम कितना है, सबसे पहले तो ये लिखो. हाउ मच इज इनकम फॉर मिस्टर अनिल, सॉरी अमन, अनिल का तो निकाल लिया हमने. अमन के लिए कितना कितना इनकम है? इट इज, डोंट यू रिमेंबर? ओके, आई शैल गिव यू हिंट. नाउ डू यू रिमेंबर? No. Yeah, yeah, Kadambari is right. It's 2 lakh 20, 2 lakh 10,000. This is his income. How much is expenditure now? A bit tough question or complicated question थोड़ा सा. नहीं पता. हमने का कैलकुलेट किया ही नहीं ना, है ना? Did we calculate? Oh, 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 oh. कादम नहीं कैलकुलेट किया है, लेकिन we should know that कादम्बरी ने निकाल लिया कि 1,40,000 is his एक्सपेंडिचर. कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था ना कि अगर 200 रुपए इनकम है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना रहेगा. माइन 1,40,440. नो, आई डोंट एग्री विथ यू वेदांत. योर आंसर इज रॉन्ग. ओके, यू नीड टू क्रॉस चेक इट. ठीक है. सो मान लो कि 2,10,000 रुपीज इनकम है. सो इसको अगर हम तीन टुकड़ों में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तीन टुकड़ों में, सी 3:2 है ना, मतलब 3 अगर इनकम है तो 2 उनका एक्सपेंडिचर है, राइट? सो 2,10,000 को अगर हम तीन टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम्स 70,000, राइट? 70,000 बनेगा. सो 70,000 इज वन टुकड़ा या फिर वन पार्ट ऑफ इट, राइट? एंड एक्सपेंडिचर इज हाउ मच? एक्सपेंडिचर इज टू पार्ट्स. मतलब 2,10,000 के अगर हम या एग्जैक्टली, या दैट वे वेदांत, सॉरी विनीत, यू हैव रिटन इट इन अ करेक्ट मैनर. 70,000 इंटू 2 इज द एक्सपेंडिचर. सो कितना हुआ टोटल एक्सपेंडिचर? 2,10,000 में से एक्सपेंडिचर कितना हुआ? एग्जैक्ट वैल्यू दैट इज 1,40,000. आई थिंक कादम्बरी एंड विनीत हैज रिटन इट, and Vedant has also written it, but he has got a bit different value, या फिर उसका कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुआ रहेगा, so he will rectify it, I'm sure. ठीक है. So now tell me the savings. Last question. Savings made by Mr. Aman. How much is the savings, students? Yeah, answer is already written in the chat box. It's 70,000 rupees, right? It's 70,000 rupees. Okay. Yeah, so that was it about this example. Now, if you wanted to परफॉर्म दिस सेम एग्जाम्पल, अब मतलब अभी इस एग्जाम, आई होप कि ये एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपको बहुत मजा आया होगा, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व इन दिस एग्जाम्पल, राइट? सो कुछ बहुत मतलब बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को भी मिली होगी कि हाउ वी कैलकुलेट द थिंग्स एंड ऑल, राइट? So I hope it was very interesting for you and it wasn't confusing for you, particularly this example. So if you want to solve example like this, you can do one thing. You can simply take this solution. The wrong solution is there ना, कि यहाँ पे गलत solution दिया है, but we can make a good question out of it. कैसे? कि यहाँ पे अनिल्स मंथली इनकम उन्होंने बोला है कि 9,600 रुपीज है. ठीक है. सो टेक दिस एज अ वैल्यू. मतलब जो लास्ट का यहाँ पे हमारा सेंटेंस है ना, चेंज दिस सेंटेंस. इफ अनिल्स मंथली एक्सपेंडिचर इज 96,000 रुपीज, जो है ना, ये सेंटेंस चेंज कर दो. एक्स व्हाट वी कैन से, रिप्लेस दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस चेंज कर दो इस सेंटेंस से. अनिल्स मंथली इनकम इज
9600 रुपीज, 9600 रुपए। ठीक है। सो ये दो सेंटेंस अगर आप चेंज कर दोगे, सो यू विल गेट अ कंप्लीटली न्यू एग्जांपल। ठीक है, मतलब यू विल गेट अ कंप्लीटली न्यू एग्जांपल। 9600, नॉट 96,000, इट्स नॉट 9,600 रुपीज। ओके, so you can do like do like that. So yeah, that's it, students. Let me just see how much is pending. Okay, so next is practice set 6.1. So we'll see that in the next class. That's it for today's class, to students, and bye bye, take care, see you in the next class. You are free to leave the class. Bye.